This is a story मुझे about a girl. She came from nowhere and she became Pakistan's social media superstar. Happy Valentine's Day. Her name was Qandeel Baloch. कुछ ऐसा करूँगी कि लोग परेशान हो जाएंगे. Her highly provocative videos shocked many in Pakistan, but brought her fame. On the 15th of July 2016, कंदील बलोच के कत्ल के हवाले से पुलिस Qandeel was killed by her brother because in his eyes, she had brought shame on the family. Her parents want justice for their daughter. बेटी दलेर ऐसी थी ना, सिर्फ पाकिस्तान में दलेर नहीं है, मुझे नहीं देखी। औरत थी तो दलेर में कोई नहीं देखी। Nearly 1,000 women are killed in Pakistan every year in the name of honor. My name is Hani Taha, and like Qandeel, I'm a young Pakistani woman. Does Qandeel's life and death change anything for women in my country? Shah Sadruddin. This village in rural Punjab is where Qandeel's story begins. Driving through these streets, I can't imagine the Qandeel that we knew living here. Here, women stay at home and are rarely seen. This is the house where she grew up. Muhammad Azim, her father, was a farmer, and her mum, Anwar, a housewife. Qandeel had 6 brothers and 2 sisters. लेकिन वो कमरा कंदील का था, वो वाला यही वाला बचपन में यहाँ पे होती थी. Qandeel spent her childhood inside this room. ये कब की है? हाँ ये कब की है? पहली जडानी ने गई ना शुरू है. अच्छा शुरू बचपन की कोई नहीं है? नहीं बचपन की नहीं है. जब पैदा हुई थी नहीं स्कूल गई थी स्कूल वगैरह? स्कूल तो वेंदी ना हो मेरे को कहीं नहीं 30 साल गुजर गए गुम थी गए. हाँ तो सही गुम थी गए ना 14-15 साल. हाँ चलो लेकिन मुरा तो नजर दी है ना. It wasn't long after this photo was taken that, in keeping with local tradition, Qandeel was married. But her marriage only lasted a year. As I looked around, I tried to imagine the courage it took to leave this place, taking those first brave steps, knowing you were breaking every social norm and taboo. After her divorce in 2007, Qandeel settled in Multan, a city a couple of hours' drive from the village, working as a hostess for a bus company and then in marketing for a multinational. It was also around this time that Qandeel started making videos for social media. For Pakistan, her videos were provocative and daring. But her dream was to make it into the mainstream. Like so many other girls trying to break into the scene, the reality was anything but glamorous. To earn money, Qandeel was probably working as an escort. The money supported her family, and she could afford to move her parents to Multan. Her parents wanted to show me the house in which she was murdered. Syed Safdar Shah is a lawyer from their village and is helping them for free. उसकी सोच थी कि ये मकान जो है ना मैं इनको खरीद कर दूंगी, वालिदैन को ये मकान खरीद कर दूंगी. ये उसने मकान ले आकर दी, हम बैठे हैं, सब कुछ उसने किया, सोफे दे दिया, कंदर पड़ा, उसने ले आकर दी. इधर कंदील केस उसी का बना. हाँ वो मर्डर भी ना वो कम है. अच्छा वो उस कमरे में मर्डर. On the night of the murder, Qandeel's younger brother Wasim drove from the village to Multan allegedly with 2 accomplices. After the family meal, he mixed sleeping pills in with milk, which the whole family drank. He waited for the pills to kick in,
And when his parents went off to bed, Wasim fetched his alleged accomplice, and together they entered Qandeel's room and killed her. ये कमरा था हाँ जी इतने खट पे ही ना इतने इतना ही सोई पर पंखे के नीचे। हाँ पत्थर ये हुई जा खाली माली पैंट तो मैं कुछ निशान आना वाला पर्स सट के था ये सुइयां ये ना मस्कारा एक पोनी ये बंदे ये मोबाइल का चार्ज इसे चीज़ आने ना जमा रखती है Multan police are investigating Qandeel's murder. Atiya Jafri is the police officer leading the investigation. She was one of the first people at the crime scene and accompanied the body to the morgue. इस चारपाई पे वो उसका मर्डर हुआ है, इसी पे उसकी डेड बॉडी पड़ी। यहाँ पे उसका सर था, पिलो था पिंक कलर का, वो हमने एज एविडेंस कब्जे में ले लिया, हमने फोरेंसिक साइंस में भेजा, उसके ऊपर स्टेन थे। तो यहाँ पिलो के ऊपर उसका सर था, बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी, बिल्कुल यहाँ उसके पाँव थे। और मैं आपको बताऊँ उसके पाँव उसके हाथ देख के लग रहा था कैसी नफीस और खूबसूरत खातून होगी। तो वो एक बड़ा तकलीफ दे अमल होता है ऐसे देखना किसी खातून को। बस यकीन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये कंदील बलोच है। एक तो आपका रोल है एज अ पुलिस ऑफिसर, एक प्रोफेशनल के तौर पे, और एक औरत भी हैं आप। तो जैसे आप केस डिस्कवर करती हैं तो आपके अंदर क्या कश्मकश चल रही है कि जी बतौर औरत मुझे औरत का केस? सबसे ज़्यादा तो एतराज़ इस बात पे होता है कि मोस्टली लोग जो है ना ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि ठीक ही हुआ है, अच्छा हुआ है। मुझे इस बात पे अफसोस होता है। देखिए ना, जब हम मुस्लिम हैं, मैं हमें दूसरे मज़हब जो हैं वो भी इस बात पे, हर मज़हब ये यकीन रखता है इंसानी जान। लेकिन जैसे अब हम कहते हैं हम बड़े अच्छे मुस्लिम हैं, हम बड़े अच्छे मुसलमान हैं, खासकर पाकिस्तानियों को बहुत गुमा, तो मैं कहती हूँ सिर्फ मुझे ये बता दें कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने कहाँ कहा है जो औरत अच्छी नहीं है उसको मार दें। तो ऑनर किलिंग में सिर्फ एक औरत को मतलब है ऑनर की, मुझे तो एक समझ ही आज तक नहीं आई ऑनर क्या चीज़ है, सिर्फ खातून पे ही क्यों है। A few years before her death, and as Qandeel's ambition grew, she left Multan for Karachi, entering the heart of Pakistan's entertainment industry. This is me, Qandeel Baloch. I'm professional model. Qandeel's appearance on Pakistan Idol thrust her into the limelight. Even though she didn't win, she was an instant hit. She became a regular on national television, promoting her brand. शूट भी कराना ज़रूरी है पॉपुलैरिटी के लिए, आपको इन रहने के लिए आपको अजीब अजीब से सोशल मीडिया पे पिक्चर अपलोड करना भी ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। It was on one chat show that she met Mufti Kavi, a well-known celebrity cleric who was also from Multan. The two flirted on camera. Mufti Kavi suggested that they meet next time he was in Karachi. वो कन्वीनर हूँ तो मैंने चांद देखने के लिए शाबान में भी आना है और रमज़ान में भी, तो इंशाल्लाह मुलाकातें होंगी। जी ज़रूर। अच्छा मुफ्ती साहब, होगी हमारी। आप लोगों को पता है? A few weeks later, during the holy month of Ramadan, Qandeel Baloch met Mufti Kavi in a hotel in Karachi. अल्हम्दुलिल्लाह पहले जनाब हमने It was during this meeting that she took a number of selfies. In one, she was wearing the Mufti's hat. This picture in particular caused a media storm. The selfies spread like wildfire. Soon she and the Mufti were everywhere. In the fallout, Mufti Kavi was suspended from his job with Pakistan's Religious Council. For her brother Wasim, the media intrusion was the final straw. और भी बहुत सारे मसले बने हुए हैं ना। कौन से? वो जो मौलवी का मसला बना हुआ है, हमारे घर मीडिया आई है। पहले तो ये मसला नहीं बना था ना, इसलिए मसला बना है कि हमने ये काम किया। But why were those selfies with Mufti Kavi so controversial?
दरअसल उन्हें ये बुरा नहीं लगा कि कंदील ने और मौलवी ने मिलके सेल्फियां बनाई, बुरा ये लगा कि फिर कंदील ने उनको सोशल मीडिया पे डाल के लोगों को बताया कि भाई इस तरह मौलवी साहब मेरे पास आए थे और हमने इकट्ठे बैठे थे, हमने खाया पिया और सेल्फियां बनाई। और लोगों ने ये फील किया कि भाई ये मुफ्ती की इंसल्ट हो गई है इस बात पे, तो ये कंदील ने क्यों की है? ये नहीं देख रहे कि इसमें हिस्सेदार वो भी हैं। A month after the selfies appeared, Qandeel was killed. How much did the photos with Mufti Kavi contribute to her murder? I went to meet him at his madrasa in Multan. Make sure I look decent. Mufti Kavi comes from a family of clerics who have lived in this city for generations. To the locals, he is a revered and respected religious scholar. जो ख़ानदान है वो फिर भी बार बार आप ही का नाम ले रहा है कि आपकी वजह से लोग जो है कंदील के ख़िलाफ़ हो गए, और उसके भाई को भी जो है जिन लोगों ने फिर वर्गलाया, आप ही की वजह से वर्गलाया। इब्तिदाई दिनों में हो सकता है कि कुछ लोगों के दिलों में ये बात आई हो कि मुफ्ती साहब कसूरवार हैं। मेरे ख़ानदान को जानते हैं, जो मेरे गुफ्तगू से बाखबर हैं, मैं नहीं समझता कि उनके दिल में ये बात आई है। सबकी बात यही थी तकरीबन कि मुफ्ती साहब आपके साथ जो कुछ इस मोहतरमा ने किया है गलत किया है। The fact that Mufti Kavi was related to the man who allegedly drove Qandeel's brother to the murder scene was drawing a lot of attention. उनसे भी उन्होंने पूछा तो उसने भी यही कहा कि जी मैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को नहीं जानता, यानी बहैसियत रिश्तेदार, और मैंने भी यही कहा कि मैं भी बहैसियत रिश्तेदार उन्हें नहीं जानता। Mufti Kavi wanted to make it clear that anyone who disrespected the clergy in Pakistan, as Qandeel had done, could face serious consequences. उसे इस बात का एहसास होना चाहिए था कि मुफ्ती अब्दुल कवी एक बहुत बड़े मजहबी ख़ानदान का फ़र्द है। उसे इस बात का यकीनन एहसास होना चाहिए था कि इस इलाके में आलिम का और मुफ्ती का एक एहतराम है, और जो आदमी किसी अहले दीन पर, उस पर जब हम किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाएं तो हमें सबक हासिल करना चाहिए इस तरह के वाक़यात का, जिस तरह का वाक़या कंदील बलोच के साथ हुआ। Nothing Mufti Kavi said really surprised me. He said that he had nothing to do with Qandeel's murder. For him, it was an act of God. 1,000 women die each year from honor crimes in Pakistan. A bill being debated in Parliament is looking to put an end to honor crimes once and for all. It will take away the right of a family to forgive the killer. जो प्लानिंग के तहत कत्ल होते हैं ना, वो ऐसे ही होता है कि भाइयों ने मार दिया, बाप मुद्दई बन गया, तो वो फिर कर देते हैं कि ये होता है कि बाद में उसके पास जो आपका मुद्दई है मुकदमे का, उसके पास हक है किसास का कि भाई वो माफ़ कर दे कातिल को, ये होता है। अब ये है कि ये जो बाबा अजीम हैं, ये अभी तो हैं मुद्दई इसके केस के, और बेटे को उन्होंने नॉमिनेट भी किया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर इस बात पे कायम रहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ना, हमारे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बेटी तो चलो चली गई, अब 3-4 बेटों की और भी कुर्बानी दूँ। I wanted to talk to Qandeel's father about Atiya's concerns. Today, he's going to testify in a bail hearing of 2 of the alleged accomplices, Basit the driver and Zafar, who it is claimed had helped plan the murder. He hasn't visited his son Wasim in jail, but some relatives have. कभी कहता है कि जी मुझे अफसोस है मैंने जो किया है। रात को सोता है ना, हाँ जी, जब नींद आती है ना, नींद में आ जाती है बहन, तो कहते मुझे क्यों मारा, क्या करते सारे रात वाले लोग कहते ना दूसरे जेल वाले, वे सानू नींद नहीं करते, तो पता लगे उसको, शायद पता लगे उसको मैंने क्यों मारा, क्या गैरत का नाम था। अभी गैरत देखिए, देख रहा ना, वो दोस्त है मौत सजा। आप चाहते हैं सजाए मौत हो उनको भी? Many honor crimes from rural areas never come to trial. Their deaths are often reported as suicide or accidents.
The day after the selfies with Mufti Kavi were released, Qandeel appeared on one of the most popular talk shows in Pakistan, hosted by Mubashir Luqman. लेकिन आपने जब मुफ्ती साहब की टोपी पहनी, आपने जब मुफ्ती साहब की टोपी पहनी मोहतरमा, he loves me a lot. जी. Sorry, come again. जी. मैंने कहा I know मुफ्ती साहब मुझसे बहुत प्यार करते हैं. He loves me a lot and but उस प्यार का उन्होंने गलत फायदा उठाया है. तो मुफ्ती साहब ये क्या फरमा रही हैं? सही है ये? मुफ्ती साहब बोलिए. मैं एक बात कह देता हूँ कि खुद मोहतरमा से पूछे कि क्या इन्होंने क्या जी जी आप बिल्कुल मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि आप इनसे पूछें कि क्या इन्होंने मुझे ये फरमाया था कि मेरे साथ बात कर रहे हैं कि क्या मुफ्ती साहब अपना वादा पूरा बताइएगा प्लीज. Qandeel and Mufti Kavi continued to argue. And for Mubashir, it was television gold. He extended the show to 90 minutes. This broadcast further inflamed the situation. So when you initially invited them, what were you hoping or thinking would transpire? What did you want to uncover? You see, when you are an investigative journalist, you're basically trying to get to the root and to the bottom of everything, no matter how trivial it is. And that was the story of the day. And I thought that, my initial thought was that one of them is lying and one of them is misleading the public for fake publicity or whatever. And I wanted to find out which one. Did you ever think that this was going to put Qandeel's life in danger? If I had an inclination, I wouldn't have done the show. The one thing that keeps coming up is that the media is hugely complicit in Qandeel's murder. I don't know. I think that's sweeping statement to make. I have a job to do. I interviewed Benazir as well, and then she got assassinated. Am I responsible? I am an investigative journalist. I follow up stories that are unique and that are, of interest and that need to be solved. Doesn't make it right or wrong. It's just a job that I do. You know what? He is too good. Oh my God, I can't believe it. During the selfie video with Mufti Kavi, Qandeel mentioned for the first time that she was from Multan. पहले तो मुझे ये खुशी हुई कि इनका ताल्लुक भी मुल्तान से है और मुल्तानी होने के हवाले से इंशाल्लाह जो मैं बात इनको कहूँगा. Armed with this information, the local Multani press swung into action. A few days later, details of Qandeel's personal life started appearing everywhere. Her real name was Fawzia Azim. Her passport, her family's details, the fact that she had a child from her first marriage, everything was made public. Daily Pakistan, a Multan-based newspaper, is where her details were first revealed. कैसे हैं आप आज़म साहब? अल्हम्दुलिल्लाह. Malik Azam was the man responsible. हमारे इलाके के लिए पहली बात थी इतनी कोई खातून जो है ना अपने आप को आगे ला रही है इतनी करेज के साथ. तो उसके बाद जो है ना हमें भी हुआ कि जो है ना इनका देखें ये कौन है. तो गालिबन पासपोर्ट आपके हाथ लगा था जो प्रिंट किया? हाँ जी, पासपोर्ट भी आ गया. तो आपको ये नहीं लगा कि अगर इसकी ठीक है नाम तक पर्सनल डिटेल्स अगर पासपोर्ट जैसी इतनी पर्सनल चीज़ अगर प्रिंट कर दी जाए तो लोग इसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे? नहीं, इसका इतना जो है ना हमें रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी. आपको पर्सनली qandeel की मौत कितनी अफेक्ट की है? मेरी पर्सनल फीलिंग यही है, मैं ना करता ये. फिर इस तरह के जो मॉडल्स होती हैं उनको भी सोचना चाहिए कि सोसाइटी कितना ऑब्जर्व कर सकती है. हम किस माशरे में क्या फेंकने जा रहे हैं, क्या लोगों का माइंडसेट इतना है उसको कबूल करने का. As the media pressure intensified, Qandeel became increasingly worried about her safety. वो इस मुफ्ती अब्दुल कवी के बाद I swear मुझे इतने ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे कि मेरी ज़िंदगी से सुकून चला गया. मुझे मेरी रातों की नींद उड़ गई है.
2 weeks before she was murdered, she asked the authorities for protection, but her request was ignored. मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली की जान को खतरा है। Qandeel's parents are back at the village, and they've had some bad news. They say they're concerned for their safety. Zafar, one of Wasim's alleged accomplices, has been granted bail and has moved back to the village. झगड़ा हुआ है, सुबह झगड़ा यही है। किसका? उन लोगों का, जो सफर के बाप। अच्छा, यहाँ पे आए थे आपके यहाँ? हाँ। क्या कह रहे थे? क्या मैंने कहा भी हमारे सामने इधर ना आया करो। हमारे दुश्मन हो तुम। They're still waiting for the trial of Wasim and the 3 alleged accomplices to begin. कंदील बलोच की लाश सुबह सवेरे मुल्तान से डेरा गाजी खान के नवाही इलाके शाह सदरुद्दीन पहुंचाई गई। As the world looked on, Qandeel was buried in Shah Sadruddin, her home village. None of her friends made the journey. In a nondescript patch of land lies Qandeel's body, marked only by 2 Pakistani flags. To many outside Pakistan, Qandeel was a feminist, a revolutionary. But for many Pakistanis, she remains a divisive figure. For her parents, she will always be their beloved daughter. आपको लगता है कंदील ने खानदान की गैरत खाक में मिला दी? वाह 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 बेटा, वाह वाह बेटा, वाह। ऐसी बात हम समझते नहीं है। ऐसी बात कंदील तो कंदील थी हमारे लिए। कंदील थी हमारे लिए, एक फूल था। The anti-honor crime bill was passed on the 6th of October 2016. The hope is that this law will stop those who kill for honor getting away with murder.